India will not hesitate to cross the line of control. हम यलोसी पार कर सकते थे, हम यलोसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे. Rajnath Singh's big LOC warning. On the 24th anniversary of the Kargil war, India puts Pakistan's military jihad complex on notice. Prime Minister Narendra Modi pays his respects to the Kargil warriors. कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं. Line of control not sacrosanct for India. India's big message is our top focus on India First. Prime Minister Narendra Modi has just inaugurated the Bharat Mandapam. Bharat Mandapam is the venue that will host India's G20 summit. India holds the presidency of the G20 summit, built at a cost of 2,700 crore rupees, spread across 123 acres of prime land at Delhi's Pragati Maidan. What does the Bharat Mandapam look like? India Today gets you an exclusive all access to this G20 hall at the Bharat Mandapam. India Today is the first and the only channel to get you the first look at the G20 Leaders Hall. India Today's news director Rahul Kanwal is on ground zero. India Today speaks to the architects, the designers of the G20 hall at the ITPO. This is where the mega G20 summit will be held in October this year. What's extremely critical? Prime Minister Narendra Modi said this is the venue where the world will see India's rising power. I'll get you much more on this big story. We bring you this India Today exclusive with Rahul Kanwal. मैं इस वक्त उस हॉल में हूं जहां पर G20 शिखर सम्मेलन होगा. हमारे ठीक पीछे तमाम हेड्स ऑफ स्टेट, अमेरिका, चीन, रूस, चाइना, तमाम G20 देशों के नेता यहां पे होंगे. और इस खास हॉल की तमाम खासियतों के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स की वो टीम है जिन्होंने इस सपने को न केवल प्रधानमंत्री मोदी के सपने को बल्कि देश के सपने को अंजाम दिया. तो एक एक करके मैं आपकी पहचान कराता हूं और उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बिल्डिंग में जिस तरीके से इसे बनाया गया है उसमें क्या खास क्या है. संजय जी, थोड़ा अपना पहचान दीजिए और बताइए कि किस तरीके से आपने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया. नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह है. मैं आर्कोप एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, जो एक आर्किटेक्चर फर्म है, लीडिंग आर्किटेक्चर फर्म है इंडिया की, उसका डायरेक्टर हूँ. और जैसे राहुल जी ने पूछा भी कि कैसे आपने इसको डिजाइन किया, मेरे ख्याल से जब हमने इसका डिजाइन शुरू किया तब हमारे दिमाग में एक बात बहुत अहम थी और वो ये थी कि ये सेंटर जो है ये एक ऐसा सेंटर बनने वाला है जो सारी दुनिया से जो बड़े बड़े लीडर लोग आएंगे उनके लिए हमारी ये इंट्रोडक्शन है. तो क्या हम अपनी कला, अपनी संस्कृति, क्या उन सब चीजों को हम सारे वर्ल्ड लीडर्स को बिना इंट्रूसिव वे में प्रदर्शित कर सकते हैं. तो जरा बताइए, जो यहाँ पे आपने तमाम चीजें लगाई हैं उसके बारे में बताते हुए कि क्या खास बनाया आपने. तो अब आप देखिए, अगर जैसे ये G20 हॉल है, इस G20 हॉल में अगर मैं अपनी वॉल्स को देखूं, सारा काम हमारा रेड सैंडस्टोन में हुआ है, विच इज जो हमारे देश के लिए बड़ा यूनिक है. ये पत्थर यही मिलता है. इसमें हमारी कलाकारी है, सारी कार्विंग है. हमारी जो जालियां हैं वो हमारी बहुत इंडियन जालीज है जिनको हमने इस्तेमाल किया है. अगर आप सीलिंग की तरफ देखें तो आप ये देखेंगे कि हमने काफी आर्ट वर्क यहाँ पे यूज किया है जो राजस्थान, गुजरात, ऐसे लोगों से जो अपने घर में काम करते हैं उनके यहाँ से आया है. कारपेट अगर आप देखेंगे तो ये कारपेट जो है ये एक मिस्टिकल थीम पे बना था जो बदोई में बना. फिर हम ये चाहते थे कि हमारा जो कश्मीर है उसको हम सारी दुनिया के सामने लेके आए, तो हमने उसको बिल्कुल सेंटर पोजीशन दी और ये 12 हमारे कश्मीर के कारपेट्स
जो अंदर लगे हुए हैं जी, जो लाल रंग के हैं। और आप इनको ध्यान से देखेंगे राहुल जी, तो ये सारे के सारे 12 जो कारपेट्स हैं वो सारे अलग हैं। ऑल ऑफ देम लुक सेम, दिखते एक जैसे हैं। आइए चल के देखते हैं हल्का नजदीक। इनमें डिफरेंस है। अच्छा, क्या फर्क है जरा बताइए। इनमें डिटेलिंग का फर्क है। देखिए, जैसे ये वाला कारपेट आप देखेंगे, इसमें आपको पक्षी नजर आएंगे। वो वाला जो आएगा उसमें आपको मीनाकारी नजर आएगी। जो थर्ड वाला है उसमें एनिमल्स के हंटिंग सीन्स हैं। लेकिन जब आप इनको देखेंगे एक साथ तो ऐसा लगता है कि ये सारे एक ही जैसे हैं। और ये सारे तकरीबन 11 से 12 महीने बुनकरों ने अपने घरों में बैठ के हमारे लिए बुने। तो इसमें हमने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि हम इनके पास गए और इनके साथ बैठ के हमने इनकी परिश्रम देखा। हमारे साथ नरसी की भी टीम है जो कि तमाम यहाँ पे अलग अलग देश के हिस्सों से चीजें लगी हैं, कुर्सियां बनी हैं, आपने उनको बनाया है, उनके बारे में बताइए। क्योंकि पहले प्लान हो रहा था कि इटली से इंपोर्ट होंगी, फिर आपने बोला कि इसको आत्मनिर्भर ही करना है। जी, ये तो सर मोदी जी का सपना है। और जैसे भी आपने जो संजय साहब बता रहे थे भी पहचान दे दी कि मेरा नाम नरसी कुलरिया है। नरसी कुलरिया, सुथार में बीकानेर से हूँ। पार्लियामेंट में भी आपने काफी काम किया था। जगदीश कुलरिया है। तो मेरा ये कहना था कि जैसे भी आप मोदी जी ने ऊपर कहा कि मोदी जी शिल्पकार भी है, वो शिल्पी है, वो उनको इतना नॉलेज हर चीज में, डिजाइन में। जैसे संजय सिंह साहब अभी बता रहे थे, हम काम करते समय मोदी जी खुद हर चीज रिकॉर्डिंग करके हर चीज दूसरे दिन थोड़ा चेंज कराते हैं। मुझे ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। तो ये बता रहे हैं। यस, मतलब आप बोल रहे हैं असली इंटीरियर डिजाइनर वही है। रियल अगर आप लोग बोल रहे हैं कि इंटीरियर डिजाइनर आप है, लेकिन बेसिकली मोदी जी ने ही इंटीरियर डिजाइन। यस सर, मैं 2 साल से टच में हूँ। डायरेक्टली मोदी जी से तो बात नहीं होती, लेकिन पीएमओ की टीम है, उनके जो लोग हैं, मैं ये कह सकता हूँ हर चीज बनती है उनके हिसाब से, उनके अनुसार बनती है। हमारा ये हमारा आज मोदी जी का सपना है कि जो चीज टेबल जो इटली में बनती है उससे अच्छा हम आज यहाँ बनाते हैं। जो जैसे आप सीलिंग देख रहे हो, स्टोन का वर्क, जैसे संजय साहब का डिजाइन है, हमारा काम है एग्जीक्यूशन करना है। क्योंकि आज हमारे देश में अनस्किल ज्यादा है, स्किल कम है। तो मैं स्किल के ऊपर राहुल जी पैन इंडिया में काम करता हूँ। मैं एक खास चीज और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुर्सियां लगी हैं, उन कुर्सियों को बनाने के लिए मशीनें खास तौर से इटली से आई थी। पहले चर्चा हो रही थी कि इटली से ही कुर्सी को मैन्युफैक्चर करके यहाँ लाया जाए, फिर तय हुआ कि नहीं, इसको हम यहीं बनाएंगे। उसके बारे में उसकी कहानी बताइए। और ये लकड़ी सारी इंडियन टीक है, तो सारा इंडियन टीक यूज हुआ है इस पे। ऑल इंडिजिनियस इंडियन मटेरियल सारा यूज हुआ है। ये हर चीज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। बाहर से इंपोर्ट कोई चीज नहीं किया है, न पार्लियामेंट में किया है और हमारे फर्नीचर में हमने कोई चीज इंपोर्ट नहीं किया है। कुछ हार्डवेयर में और इलेक्ट्रिक में किया, मुझे पता नहीं। बाकी सिविल इंटीरियर जो आपको दिख रहा है, हर चीज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आप लोगों ने पार्लियामेंट में भी काम किया था, पार्लियामेंट में काम करने में और यहाँ पे क्या फर्क है? बहुत अच्छे, दोनों इक्विवेलेंट काम है। इसमें भी बहुत कारीगरी काम है। पार्लियामेंट में तो पूरा लकड़ी में, मतलब नक्शे का काम, कारीगरी का, जो हमारे दादा परदादा पहले हाथ से करते थे, वो आज हमने मशीनों से किया पूरा। जिस तरह की डेडलाइन रही है उसमें सिरदर्द ज्यादा रहा है या आनंद ज्यादा रहा है? नहीं, बहुत वी एंजॉय दैट आल्सो। बिकॉज अगर पार्लियामेंट अगर हाथ से काम करते थे तो 5 साल लगता था, हमने मशीनों से किया, हमने उसको 18 मंथ में पूरा किया इंटीरियर काम। हमारी बहुत अच्छी मशीन है, कॉम्प्लेक्स सीएनसी मशीन है, जिसके ऊपर हम सारा फर्नीचर बना पाए। जो आप अगर पार्लियामेंट के अंदर चेंबर्स के अंदर जो बेंचेस अगर आप देखोगे तो बेंचेस एक रेडियस के अंदर है। वो सारा रेडियस अचीव करने के लिए स्पेशलाइज मशीन्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास हैंडी थी। उस वजह से हम मोदी जी से बहुत खुश है, क्योंकि आज ये सेंट्रल विस्टा पूरा बन रहा है। इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, एक से एक कारीगरी का काम मिलेगा। And I want to quickly cut across to India Today's news director Rahul Kamal joining me for more on this. Rahul, world leaders will see this when the G20 summit happens. You're right there. Describe the place, describe the effort that went into this to showcase India's rising stature. It was very interesting, Gaurav. I'd actually gone there for that inauguration of the Bharat Mandapam, and then these architects and interior designers who you just saw happened to literally grab hold of my hand and said, "Come see the hard work that we've put in," and that no one's speaking about what we've done. And the story that they told us was quite fascinating. Absolutely. The Prime Minister himself taking charge of the interior decor, Piyush Goyal as the execution and operations manager, literally calling every week about different tables, the chairs, the leather, the detailing. And some interesting thoughts about how this is. I asked them, how is this different from what's been done in the past? They said, when you remember what happened in China, for example, there was scale, like the dining hall was as big as a football field.
What they're trying to do here, Gaurav, is focus on detailing, on intricacy. So first there was a plan to bring in chairs from Italy. They said, no, we'll manufacture these here. Red stone from Rajasthan, chandeliers of the kind that I haven't seen, the glass coming in from the Czech Republic, the carpets coming in, the most giant, Gaurav, both you and I have spent so much time in Kashmir, the most giant carpets, and those are handmade, intricate carpets, which would take months on end to do. So lot of passion, skill at play over here. And no one's been inside. This is where Xi Jinping, Vladimir Putin, Joe Biden, the who's who of the G20 are going to be there. So that's the preview that we were able to give our viewers. It's quite stunning. On the outside, Gaurav, it doesn't look ready, okay, because it rained as much as it did in the past few days. The roads are still not ready, and this is going to be like an Indian shadi. Just as you come, when the Bharat is coming in, you're getting things ready. So it will take a Herculean effort on the outside, but the inside looking absolutely stunning, very high end. We've done so many events, auto expo, trade expos of different kinds at the Pragati Maidan. The place is really run down, and I think that's the point the Prime Minister made in his big address. He literally started campaigning for a third term in office, saying you need scale. I think this Bharat Mandapam, the International Expo Center, is about scale, and the Prime Minister said, give me another term and your dreams will start coming true. His critics will say he's buying more time, but his followers will say it takes 10 years to get the base ready. The next 5 is when he thinks he'll be able to deliver on his promises, Gaurav. Stay with me for a moment, Rahul. You spoke of the Prime Minister and what he said at the inauguration of Bharat Mandapam. Let's listen into the Prime Minister as he inaugurated Bharat Mandapam. This is the convention center that will host India's G20 summit. India has the presidency of the G20 this year. The Prime Minister said the world will witness India's rising stature at Bharat Mandapam. Now this is spread over 123 acres at Pragati Maidan. Bharat Mandapam is the International Exhibition-cum-Convention Center complex. It's been built at a cost of 2,700 crore rupees. But that's business being given to Indians. The Prime Minister at this inauguration speech also hit out at the opposition. He accused the opposition of trying to stall India's growth story and development projects through its negativity. He insisted that this negative lobby will be silenced. He said when he took over in 2014, India was the 10th largest economy. He's promised to make India one of the top 3 economies in his third term. Let's listen in. नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहाँ। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या-क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए, लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी, और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे।
हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। Let me now shift focus to the other big story we're tracking here on India First. India will not hesitate to cross the line of control, insists Defence Minister Rajnath Singh. He was speaking to soldiers and their families at the Dras War Memorial after paying respect to our braves on the 24th anniversary of the Kargil conflict. Rajnath Singh's message to India's adversaries is loud and clear. The line of control is not sacrosanct. This is a message not only for Pakistan, but also for China and Chinese investments in Pakistan-occupied Kashmir. Ashraf Wani gets us more. उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। Defence Minister Rajnath Singh's big warning to Pakistan. A clear message: India's generosity of not crossing the LOC during Kargil should not be seen as India's weakness. Talking about Pakistan repeatedly stabbing India in the back, Rajnath Singh warned Pakistan that India would not hesitate to cross the line of control, to punish terrorism and to maintain India's honor and dignity. कि हम एलओसी पार कर सकते थे, हम एलओसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। Rajnath Singh also paid tributes to the braves at the Kargil War Memorial in Dras to mark the 24th anniversary of India's victory over Pakistan in the 1999 Kargil War. और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं हटे। Defence Minister Rajnath Singh also met family members of the braves who made the supreme sacrifice of their lives in the Kargil conflict. Prime Minister Narendra Modi led the nation in paying homage to the Kargil braves, remembering the valor of those who made the supreme sacrifice of their lives, keeping India first. कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। General Ved Malik, then Chief of the Army Staff, spoke of the new weapons and systems India had acquired, turning our country into a lethal war-winning machine. There is a transformational change. The human resource asset of the Indian Army is still the best in the world. Okay, it was in that time, it was today also. But what has changed major is one, that we have got much better equipment, much better arms, weapons, everything. India's message to Pakistan's military jihad complex and to Chinese investment in Pakistan-occupied Kashmir is clear. The line of control is not sacrosanct and India will not hesitate to cross it. With Ashraf Wani in Kargil, Bureau Report, India Today. After the surgical strikes and the airstrikes at Balakot, what should one make of Defence Minister Rajnath Singh's statement? Joining me on India First are two veterans of the Kargil operations. Lieutenant General Vinod Bhatia is former Director General of Military Operations. He was there on Ground Zero in Kargil. Also, Group Captain Augustine is a former Mirage 2000 fighter pilot, also flew sorties
on those heights. But General Bhatia, what do you make of the Raksha Mantri's statement? Is this a signal of intent? And it's a demonstrated capability. We have done that earlier during Uri surgical strike, during the Balakot precision air strike. And it is a clear statement that you cross the red line, we'll come and hit you. We have a strategy, a proactive strategy, a preemptive strategy, and a punitive strategy. Okay. It's part of the overall strategy. See, we are proactive, you will get punished for it, and we'll preempt. Like in both Balakot was a preemptive strike. They were new on the Jabba top, they were 300-odd terrorists of the LET who were being trained, and most of the suicide attacks. And that was a preemptive strike. Uri again was a targeted strike on the terrorist camp close to the line of control, where they were ready to infiltrate into our territory. So that is again a preemptive strike and a punitive. General, give me a moment as we try and re-establish this audio-video link with you. Group Captain Augustine, without war being declared, India sent fighter jets across the line of control and bombed Pakistan across the international border in Khyber Pakhtunkhwa. Balakot was where actions spoke louder than words. What do you make of the Defence Minister's statement, the timing, the location, and what he said? You know, you've been there at Kargil, Gaurav, and you've captured wonderfully in your Dateline Kargil as well as Veergata. And you and I are aware the constraint with which we worked in Kargil, where it was told that neither the fighter aeroplane nor any soldier will cross the line of control. I mean, you remember how peeved all of us were on the ground, but in hindsight, I feel it was a right decision, given how US also got involved at that time when their Prime Minister went running on 4th of July, if you remember. So, be that as it may, Balakot is not across line of control. Balakot is across international border. It is in Pakistan. It is not in actually the POK. So from then to now, there has been a sea change in the thought process of the Indian polity, in the thought process of young children who are born after that, and they are probably a little more vocal and little more, or better than us. Version 2 is always better than version 1, like you and I. So these people are appreciating the fact that अगर आप एक मारोगे हम 10 मारने की काबिलियत रखते हैं. So that is something has not only gone down well with the Indian population, but it's also shown us in a great light in internationally as well, which is why probably we are getting the. For me, it was a privilege. It was a privilege and an honor to see our braves in action in the Kargil war and to write about it. General Bhatia, Pakistan is a nuclear weapons state. Pakistan has constantly upped its tactical nuclear weapons, but has India found that threshold to punish Pakistan without escalating this conflict up to a nuclear threshold? Definitely, we have demonstrated that, and Pakistan understands that, and that is why today they are trying to review the nuclear doctrine, and they have a doctrine which they are trying to propagate as 0 to 2750. That means 0 means ground zero, horizontal and vertical. 2750 is miles, covers up to Andaman and Nicobar. But that is Pakistan's behavior always. Under the nuclear umbrella, they have always tried to, perpetrate terror attacks, including Kargil. Today we're talking Kargil, and I remember meeting in Dras on the 26th of July today. You see, Kargil was under nuclear umbrella. We should have no doubts about it. But we called the bluff during the Uri strikes first time when we said that our strategic patience has exhausted. And we have demonstrated strategic resolve, both in Uri strikes and in the strikes in Jabba Top. I refuse to call it Balakot, because Balakot 20 kilometers away in Jabba Top. And when we talk of precision strikes, we have plus minus, mid-range sort of a thing. And Jabba Top is a known terrorist training camp, the LET. Right? So that's what we demonstrated. And today the Raksha Mantri has very categorically said that you cross a red line, we'll come and hit you where you are, irrespective of whether Indian territory in Pakistan or Kashmir.
Uri was Indian territory. Yes. Pakistan said that Indians have not entered Pakistan territory. They were right. They said the truth. We were hitting them in our own territory. That's our territory. But Balakot, Jabbar Top was Pakistani territory. And we hit them in Pakistan. And that is what Pakistan realized. And today, no terror, no talks. I think Pakistan is feeling the pinch. They're getting hurt by the Indian policy in Pakistan today. Okay. Because they always sought parity with Pakistan. So you're saying Balakot has truly hurt Pakistan. Group Captain Vinod, Kargil after 1998 Pokhran tests and Balakot, they're both examples of punishing Pakistan state-sponsored radical Islamist terror and Pakistan army, and yet remaining way below the threshold of a full-blown regular conventional conflict, let alone a nuclear conflict. So has India exposed Pakistan's nuclear bogey? You couldn't have asked this question to a better person than me, because Balakot, I was still in uniform, Yes. Director for Air Defense, looking after these Mirage 2000 aspects of the, the entire mission. Be that as it may, like you rightly said, see, what is really changed is post-Kargil, we didn't sit on our laurels. See, you remember those catchphrase in your early days, कि घुसपैठियों को खदेड़ना है. Yes. Remember those quote-unquote catchphrase? तो हमारा यही, what was our aim during Kargil? घुसपैठियों को खदेड़ना. That is actually not a military aim, if you look, militarily, if you ask me. Yes, we did our job. But today it is different. Today, same Raksha Mantri said, we will take back what is rightfully ours, which is POK. So you see the change of narrative, and that change of narrative is sitting on what? It is sitting on military capability. And how did that military capability come about? A lot goes to, people like you who have written about it, and also the Kargil Review Committee. See, Kargil Review Committee poked hole in where all we failed. Absolutely. And based on that... This is a conversation, gentlemen, I want to take this conversation forward over the next several days and weeks. I've unfortunately run out of time on this part of India first. But for joining me, General Bhatia and Group Captain Vinod Augustine, as always, many thanks, and many thanks for your service to our nation in the Kargil conflict and later. That's all in India first.